Good morning. My name is Dr. Pankaj Talwar and I'm the Head Medical Services of Birla Fertility and IVF. I'm a gynecologist who's trained in IVF and clinical embryology. I have keen interest in managing the patients with male infertility and andrology. I welcome you back again to our YouTube channel where we routinely educate you all about common issues which pertain to infertility. Before we begin, I would like to introduce to you Birla Fertility and IVF, where we offer compassionate care and clinically reliable fertility solutions to the men and women. Our experts at Birla Fertility and IVF, they've got experience of nearly 14,000 cycles and they specialize in developing tailor-made protocols for you which will help you to achieve consistently high success rates. आज हम बात करेंगे टीसा के बारे में. Very commonly you write to us and you contact us to know about टीसा. ये टीसा क्या होता है, टीसा का क्या प्रोसीजर होता है और टीसा कब करना चाहिए, इसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं. सो टीसा स्टैंड फॉर टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन. इसमें 4 शब्द हैं TESA. TE स्टैंड फॉर टेस्टिस, S स्टैंड फॉर स्पर्म एंड A स्टैंड फॉर एस्पिरेशन. जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ द मेन हु कम टू अस, दे आर हैविंग लो स्पर्म काउंट और दे हैव नो स्पर्म काउंट. So for all the men who come to us with no sperm count, we label them to be having azoospermia. जब हम बोलते हैं कि आपके स्पर्म्स नहीं बनते हैं तो आप बहुत निराश हो जाते हैं. You get worried, you go into depression and you go into you have lot of grief. तो आपको सबको ये जानना है कि अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. TISA is a technology which we carry out at Birla Fertility and IVF. It's a very good technology and has got very good outcome. So before we understand term TISA, we have to understand how are these sperms formed in a man and how do they travel. So we have to know that the sperms are found in a man. जो शुक्राणु होते हैं ये किसी भी इंसान की टेस्टिस के अंदर बनते हैं and they take around 90 days to mature. Sperms are found in the testes and then they travel a long passage. उनको एक बहुत लंबा सफ़र पूरा करना होता है and after formation they have to mature and they have to become more competent. So they pass through a small tube called epididymis. After that they go to vas deferens and finally जो अंत में जो ट्यूब होती है we call it ejaculatory duct and after that sperms are ejaculated. So whenever there is a blockage in the whole passage, जब भी epididymis के अंदर या फिर vas deferens के अंदर या फिर ejaculatory duct के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, the blockage can occur due to infections or the blockage can be due to by birth. There can be certain conditions in which by birth the tubes are blocked or they are absent. In all these conditions आदमी के अंदर जो शुक्राणु होते हैं ये बाहर नहीं आते हैं and we label them as azoospermia. So we have to understand that whenever there is a blockage in the whole passage and testes are working well and his hormones are okay, we normally carry out FSH, LH and testosterone. जब उसके hormones ठीक हैं और testis का size और volume ठीक है और sperms बाहर नहीं आ रहे होते हैं, then we say he's got obstructive azoospermia. For all these people, doing TISA is a boon. TISA is a very simple procedure. एक ऐसा surgical technique है by which we can retrieve sperms in around 90% of the males, even more. So what do we do here? टीसा प्रोसीजर क्या होता है, क्या टीसा करने से हमारी फर्टिलिटी बढ़ती है, टीसा के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और आप ये भी बोलते हैं कि हमने कुछ और टर्म्स के बारे में भी सुना है जैसे पीसा या टेसी, ये टर्म्स क्या हैं. तो इन सब के बारे में हम आपको संक्षेप के अंदर बताएंगे. जब हम किसी को टीसा रिकमेंड करते हैं इट्स ए वेरी माइनर प्रोसीजर विद मिनिमल अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. दिस इज डन अंडर सम अमाउंट ऑफ सेडेशन और एनेस्थीसिया. Here we will plan to carry out the procedure in the OT. We take a needle and put that needle inside your testes. एक सुई को आपकी टेस्टिस में डाला जाता है और एक सिरिंज के ज़रिए हम आपके स्पर्म्स को एस्पिरेट करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड निकालते हैं किसी पेशेंट का तो we take a needle and put in the artery or a vein and take the blood sample. Similar way we take a similar needle and a syringe and put inside the testes and then we aspirate the sperms. जब sperms बाहर आते हैं उनको हम देख पाते हैं एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए and then these sperms are identified
and they are divided between good and bad sperms. So normally around 90% of the patients or even more we can get the sperms, और इनमें से तकरीबन 60% लोगों के अंदर sperms की क्वालिटी अच्छी होती है. These sperms we can use for IVF ICSI or these sperms can be frozen for further use. एक और टेक्निक जिसके बारे में कॉमनली आप लोग इंक्वायर करते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाई डोंट यू डू माई पीसा, व्हाई टीसा? So we have to understand that PISA we carry out when there is a blockage just above the epididymis. जब किसी की ट्यूब में ब्लॉकेज होता है we carry out percutaneous epididymal sperm aspiration. It's a very simple method and normally we always prefer to carry out PISA for a patient. In PISA also we take a needle and put inside the epididymis and aspirate the sperms, but when PISA fails normally we shift to TISA. तो हमारा पहला ऑप्शन हमेशा रहता है कि हम पीसा करें, अगर पीसा फेल होता है तो हम टीसा के ऊपर जाते हैं. पर यहाँ पर एक कैच है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन सर्टेन केसेस वी प्रेफर टू डू टीसा बिफोर. विच आर दिस कंडीशंस? Whenever a man has got very bad seminal infection or he's got seminal fluid infection and we find that his whole epididymis and cords are inflamed, we have found that the sperms which are present there, they can have high incidence of DNA fragmentation. जब sperms एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, sperms can age very quickly and then they can have some damage to their chromosomes in the nucleus. In such cases, we always prefer to put a needle inside the testes and carry out TISA, and that gives us better pregnancy outcome. So आज हमने जाना टीसा के बारे में, आज हमने कंपेयर किया टीसा और पीसा को, and we have also learnt that these are very simple procedures, they have got minimal complications and normally they are done under very minimal amount of anesthesia. टीसा is a very good technique, very easy technique, और इस टेक्निक के जरिए all of your friends who don't have sperms, they can benefit by carrying out this minor procedure and doing sperm aspiration from the testes. I'm sure you would have enjoyed this talk. और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी, please like our channel, please subscribe it, please share it with your friends and relatives who may be having similar problems or they want to learn about the technologies. And if you want to meet us, contact us, please visit our website. You can talk to us 24/7. You can book an appointment and visit our hospital or you can drop a line to our call center. हम जल्द दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इशू के साथ जो आपकी मदद करेगा एक माता पिता बनने के अंदर.